Morning team. API prices have risen in China due to COVID, and there is a possible shortage in that. So prices like paracetamol API, which was per kg 450 rupees, is now 550 rupees. Like that, many raw material for pharma has increased. It will impact Indian companies which are dependent on China. And there is a race. So Indian manufacturing companies will set to benefit in API. So India Glycol and few more companies are there. They will set to even Ami Organic. These are companies which will benefit out of this. Yesterday, Bank of Japan, monetary policy has impacted the globe, due to which India was down 200 points and then we recovered. If this recovery sustains, then I think stocks will start to perform. As we are nearing a Santa Claus rally. Normally it starts around 20th. Yesterday I expected it to start, but it is delayed. But I think Santa Claus rally is possible, and there will be stocks and sectors which will do very good. SEBI has come with changes in buyback. The buyback, open market buyback will not be 50%. Now the cap is 75%. But SEBI doesn't like this kind of open market buyout. So that will be phased out. Even the tender route buyout, the number of days will be reduced to 80 by doing away with the norms of filing draft letter for the offer with SEBI. Visakha Industries had said that 130 crore plant built in West Bengal will be operational by August 2023. Environment friendly board and panel. The capacity will be 3.5 lakh tons, and this would be 5th cement fiber board plant for the company. Mazgon Dock has delivered 5th Scorpion submarine Vagir of project P75 on 20th December to the Indian Navy. Now it is after the trial run and everything. 2 years before itself it was ready. They run 2 years of trial run. The 6th is also given for trial run. So that also will be ready very soon. So I think Mazgon Dock, head of budget, it will be a stock to watch. The company is also on the expansion plan, where at the same time 10 capital warship and 11 submarines can be built simultaneously. If that comes on stream, then India will become a global ship manufacturer. Jubilant Food, now Domino's launches 20-minute delivery across 20 zones in India to deliver hotter, fresher and tastier pizza to customers. Positive for Jubilant Food. Previously it was 30 minutes. Now in 20 zones they will do it for 20 minutes. The Union Bank has subscribed to Star Union Daiichi Life Insurance under rights issue for a sum of 50 crores. Even Bank of India has done it previously. VIP Clothing has sold its factory for 10 crores, and this will be used for different business for production technology and innovation and marketing. Acid Cascade Technology renews contract with Airbus for engineering services. Previously Othwal Agro, now Madhya Bharat Agro Product. Now Ministry of Chemicals and Fertilizer has accorded for enhancement of production capacity of existing diammonium phosphate and nitrogen and phosphorus fertilizer from 1,20,000 lakh metric ton to 2,40,000 lakh metric ton per annum. So it is almost doubling of capacity. With that, over to you, Sitija. Thank you, sir, and good morning, everyone. हम इस कॉल को एक बार हिंदी में कर रहे थे.
स्टार्ट करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं एपीआई के जो प्राइसेस है जो कि फार्मा में लगता है उसकी प्राइस राइज हो गई। बेसिकली ये चाइना में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और चाइना में कोविड के लॉकडाउन की वजह से ये प्राइस राइज है। जिसमें से एक हम देखेंगे जैसे पैरासिटामोल है जो पहले 450 का था वो 550 के आसपास बिक रहा है। तो इससे ये इम्पैक्ट देखेंगे जो कि इंडियन बेस्ड कंपनी है जो एपीआई में एक्सपोर्ट करती है चाइना के लिए, उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट हाँ, जो इंडियन कंपनीज है जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी तो उनके लिए के बूम रहेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया इकोनॉमी ऑर्गेनिक्स, ये सब स्टॉक्स के लिए अच्छा रह सकता है क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग। इसलिए हम देखेंगे मार्केट में बैंक ऑफ जापान की जो मॉनेटरी पॉलिसी इसके चलते हमने देखा कि इंडियन मार्केट और ग्लोबली भी थोड़ी शेकी थे, 200 पॉइंट इंडिया नीचे था। बट हम जाते जाते हम देखें तो हमने पूरी रिकवरी कर ली है। तो अभी हम देख रहे हैं जैसे अभी सेंटा क्लॉज रैली आना बचा है और थोड़ा सा डिलेड लग रहा है। बट हमें लगता है कि अगर आज की जो कल की लोज है वो हम सस्टेन कर लेते हैं तो यहाँ से रैली पॉसिबल है। स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर्स हमें लगता है चल सकते हैं यहाँ से। सेबी ने भी बायबैक के ऊपर कहा है कि जो ओपन मार्केट बायबैक्स है उसको अभी बढ़ा के 50 से 75% कर दिया है। और वो सेबी ओपन मार्केट बायबैक्स को इतना ज्यादा वो प्रोत्साहित भी नहीं कर रही, इसलिए वो उन्हें फेज आउट करने वाली थोड़े से टाइम में। और जो टेंडर रूटेड बायबैक्स है उससे जो डेज है उसको भी 18 डेज पे लेके आई है। विशाखा इंडस्ट्रीज ने 130 करोड़ का वेस्ट बंगाल में एक अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो कि अगस्त 23 में रहेगा। बेसिकली ये 3.5 लाख टन का इन्होंने जो सीमेंट बोर्ड कंपनी है वो रहेगी और ये 5th सीमेंट बोर्ड का फैक्ट्री रहेगी इनकी। मस्गाव डॉक अपनी 5th स्कॉर्पियन सबमरीन जो P-75 है इंडियन नेवी को 25 दिसंबर को हैंडओवर करेगी। और जो कि 6 सबमरीन है वो अभी ट्रायल रन पे है। और हम देख रहे हैं जैसे एंड ऑफ बजट पे रहेगा तो अगर जैसे डिफेंस के चलते और जैसे एक्सपेंशन की प्लानिंग कर रहे हैं जो इनकी जो कि 10 वॉरशिप्स और 11 सबमरीन एक साथ वो दे सके तो ये एक स्टॉक रहेगा वॉच के लिए। सो ओवरऑल एक वैल्यूएशन वाइज भी अच्छा है। जुबलेंट फूड भी ने कहा है कि अभी वे 20 जोन्स में 20 मिनट्स में डिलीवरी करेंगे तो इससे हमें हॉटर और फ्रेशर पिज्जा मिल सकता है। सो ओवरऑल वे कस्टमर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। यूनियन बैंक में यूनियन डाइची लाइफ इंश्योरेंस में एक सम ऑफ 50 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है जैसे बैंक ऑफ इंडिया ने पहले किया था, इन्होंने भी किया है। वीआईपी क्लोथिंग ने अपनी फैक्ट्री सेल की है 10 करोड़ के लिए। बेसिकली ये जनरल पर्पस के लिए करेंगे, इनोवेशन से मार्केटिंग पर्पस के लिए उस अमाउंट को। मध्य भारत एग्रो ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स से कहा कि जो उन्हें डायमोनियम फॉस्फेट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर से उसकी कैपेसिटी उन्होंने 2x बढ़ा दी है जो कि पहले 1.2 लाख मेट्रिक टन थी उसको बढ़ा के 2.4 लाख मेट्रिक टन कर दी है। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे अभी दो स्टेप्स फ्यूल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर फ्यूल बड़ी उन्होंने एक अनाउंस किया पार्टनरशिप जो कि आईओसीएल के साथ है और ये बेसिकली सप्लाई करेंगे ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट जो कि सर्वो के कस्टमर का अक्रॉस करती है। सोलर ट्रैकर प्रोवाइडर जो कि नेट ट्रैकर है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है महाराजा पावर सिस्टम जो कि सिलेक्टिवली सप्लाई करेगा सोलर ट्रैकर जो कि स्टेट टू एनटीपीसी है और 306 मेगावाट से होगा नोखा सोलर प्रोजेक्ट को भी। कल हम देखेंगे आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टॉक 3% की जंप देखेंगे। इंट्राडे में 322 के आसपास का भाव था। इसका रीजन यही था कि स्टॉक मतलब कंपनी ने कहा कि वो एक स्टॉक स्प्लिट करने वाली है, उसकी जो बैठक है वो जनवरी 4 को होगी और इसको वो लोअर एनोवेशन में लेके आ सकती है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने भी कहा कि उनकी मैनेजमेंट एंटिटी ने बायबैक अप्रूव किया है, 6 मिलियन शेयर्स करेगा, 1020 करोड़ का बायबैक करेगा। इसकी मीटिंग जो है वो मंडे को थी। हिंदुस्तान जिंक जो कि सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है जिंक की, उन्होंने प्लान कर रहे हैं 8,270 करोड़ का इन्वेस्ट करने के लिए और ये कन्वर्ट करेंगे जो कि डीजल फायर माइनिंग व्हीकल्स को बैटरी ऑपरेटेड वंस में और इसको फुल्ली वो टर्न कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी और इस कंपनी को वो 5x 5 years में करना चाहते हैं। दिल्ली वैली ने कहा कि वो एक एक्वायर कर रहे हैं एल्गोरिथम टेक कंपनी जो कि प्रोवाइड करती सप्लाई चेन सॉल्यूशंस जो कि 15 करोड़ में इसका एक्विजिशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय एयरटेल ने एग्रीमेंट साइन किया है जो कि एक्वायर करना चाहती है 8% स्टेक जो कि टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है लेमनिक्स। बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है और ये ऑफर करता है रियल टाइम मार्केटिंग और ऑटोमेशन एंड सिक्योर कस्टमर डेटा प्लेटफॉर्म सर्विसेज। श्याम मेटालिक्स एनर्जी ने भी कहा कि उन्होंने एक्वायर किया है मित्तल कॉप की जो कि स्टेनलेस स्टील और वायर रॉड और बारबेल बनाते बिजनेस को। बेसिकली एक इनऑर्गेनिक ग्रोथ रहेगा बट ये चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट से जो मध्य प्रदेश में अपना बैठाना चाहते हैं और इसकी कैपेसिटीज को भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं जो कि करंटली 3 लाख पर टन पर आना में जो कि स्टेनलेस स्टील वायर रॉड और बारबेल। सिटी यूनियन बैंक ने कहा कि उन्होंने जो इनकी जो एनपीएस है उस पर थोड़ा सा उन्हें डाइवर्जेंस दिखा है। 259 करोड़ का नई एनपीएस दिखे हैं जो कि 13 बोरोवर अकाउंट है और ये जो भी अकाउंट है इनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस मोर देन 1 करोड़ है।
और इससे से 230 करोड़ जो था 218 बोरोवर्स थे, जो कि 18 आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ से नीचे थे, और 29 करोड़ का था जो कि मार्च 2022 का था। यूनोमिंडा ने भी ये कहा है कि उन्होंने एक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है कोरिया के एस्टेम के साथ, जो कि अपने एडवांस ऑटोमेटिक सेंसर्स और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एनहांस करेंगे। तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है यूनोमिंडा। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क ने कहा कि उन्होंने एक सीटी इशू किया है जो कि 100 करोड़ के आसपास है। बेसिकली फंड रेज करेंगे जो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और एसपीवीज को लेने के लिए। गेल ने भी 1575 करोड़ के एनसीडीज इशू की है। बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस है, ये अपने जो एग्जिस्टिंग जो एनसीडीज या उनके जो डेट है उसको रीफाइनेंस करने के लिए है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए भी है। हीरो मोटो को अपनी न्यू एक्सप्रेस 200 T4 वाल की लॉन्च की है। बेसिकली ये बाइक देखा जाए तो एक 1.25 लाख के आसपास की रहेगी प्राइसिंग है, और करेंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है 3000 का प्राइस। इंडियन होटल्स ने भी यस्टरडे अनाउंस किया है कि उन्होंने एक नया होटल ओपन किया है गुजरात में, जो कि राजकोट सिटी में है, और इसके ये होटल देखा जाए तो 120 कीज के साथ रहेगा, और ये सिटी सेंटर में है जो कि यात्री रोड के आसपास है। तो इसके साथ हम देख रहे हैं कि जो इनकी 20 होटल्स है अक्रॉस स्टार सिलेक्शन, विवांतो और जिंजर ब्रांड्स, तो गुजरात में 4 होटल्स अभी अंडर डेवलपमेंट में है। तो करंटली हमारी इसके ऊपर होल्ड रेटिंग है 347 की 5 स्टार। Technical and derivative. On technical front, in yesterday's session, index witnessed a selling pressure and registered its day's low at 18,200 levels. However, at the closing hours, Nifty bounced back and managed to close near 18,400 levels. So for the current week, Nifty likely to trade in the range between 18,000 and 18,500 level. The long 18,000, if 18,500 reach on the higher side, then only long might be witnessed. We maintain a positive bias on the index, and every dip will be approached as a buying opportunity. In the Bank Nifty, as long as Bank Nifty holds 43,000 mark, we maintain a positive bias on the index. However, a small correction may occur in Bank Nifty if it reaches 43,000 level. So 43,000 level will act as a make or break level for the Bank Nifty. And if Bank Nifty breaks 43,000 level, then it may retest its 50 SMA, which is placed at 41,950 levels. So overall, for both the index, we have buy and decline strategy for the upcoming trading sessions. On the derivative front, Nifty futures short built up with increase in OI by 2.26%, which was the addition by 12.57 million shares. The PCR stayed at 1.01 level. The major addition was seen at 18,600 call option by 82.25 million shares and 18,800 call option by 79.3 million shares. On the put front option, 18,300 P by 92.68 million shares and 18,200 put by 73.43 million shares. In Bank Nifty witnessed a long unwinding to the tune of minus 7.86% decrease in the OI, which was a reduction of minus 2.60 million shares. The PCR decreased from 0.97 to 0.91 levels. A major addition was seen at 43,000 put option by 33.41 million shares and 43,500 call option by 29.82 million shares. And the top 3 long build-ups are seen in Adani Enterprises, Axis Bank, and Balkrishna Industries. The top 3 short build-ups are SBI Life, Tata Motors, and Isha Motors. Now, for the very first time, long short ratio, FII stands net short by 1900 contracts, and long short position has declined from 59% to 49%. Stocks, and we have a stock for the day is Axis Bank. Sorry, buy in the range of 944 to 950 levels, and SL is at 929, and the target is around 996, and the duration is 3 to 10 days. Along with Axis Bank,
Two more stocks are likely to trade positive for the upcoming trading session, which is Maruti and Reliance. And thank you, everyone. Over to you. Thank you, Vikas. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with Bharti Airtel. The company has entered into an agreement for acquisition of 8% stake in the technology startup Lemons. The acquisition is under the Airtel Startup Accelerator Program. It is the Bangalore-based startup that offers real-time marketing automation and secure customer data platform. On Sham Metallics and Energy, the company has acquired Mittal Corp to foray into the stainless steel or wire, rod, and bar mill business. This inorganic growth will witness establishment of manufacturing footprints in Madhya Pradesh and add capacities of 1.5 lakh tons per annum stainless steel and wire rod bar and mill. On City Union Bank, the private sector lender has announced that divergence in NPAs to the tune of 259 crores consisted of 13 borrowers' accounts with outstanding balance more than rupees 1 crore for an amount of 230 crore and 218 borrowers outstanding balance less than 1 crore for an amount of 29 crore for the year ended March 2022. Also, there was divergence in provisioning to the tune of 40 crores for the same period. The divergence is the difference between NPAs reported by the bank and the accessed by the RBI. On Minda, the company entered a technical license agreement with Kodiak Ascensus to strengthen its advanced automotive sensors product portfolio. Can be considered as positive development on the company's front. On Mindspace Business Parks REIT, the company issued commercial papers worth rupees 100 crores to raise funds to be utilized towards the working capital requirements, its assets, SPVs. On GAIL India, the company has raised 1,575 crores via issuance of non-convertible debentures on private placement basis to refinance the existing borrowings and fund its capital expenditure. On Hero MotoCorp, the company has launched the all-new Xpulse 200T 4-wall. It is equipped with the 200cc 4-wall oil-cooled engine. The modern Tutor offers 6% more power and 5% added torque. The bike is available at Hero MotoCorp's dealerships across the country at price point of 1,25,700 rupees. We have hold rating on the stock with a target price of 2,997. And lastly, on Indian Hotels, the company has announced the signing of its first hotel in Rajkot, Gujarat. The new addition will be under company's Selection brand. Hotel will be occupied with 120 keys and is situated near the center of city on the Yagnik Road. With this addition of hotel, the company will have 20 hotels across Taj, Selection, Vivanta, and Ginger brands in Gujarat, including 4 under development. So we have hold rating on the stock with a target price of 347. That's it from my side. Now I request Brijesh to take it from here. Thank you, and over to you, Brijesh. Thank you, madam. The few more news updates from my side. There's a news for the doorstep fuel delivery service. There's a Fuel Buddy. They announced a partnership with IOCL for the supply of automotive and industrial lubricant. That is under the brand Servo to the customers across the country. Next is on solar tracker. The solar tracker provider Next Tracker on Tuesday said it has signed an agreement with Amar Raja Power System Selects to supply solar trackers for state-owned NTPC, which is the 106 megawatt Noka solar project. Next is on IRB infrastructure. The shares of IRB infrastructure developer went up 3%. Rupees 322 in yesterday's session. After the civil construction company has announced that their board will meet on January 4, 2023 to further stock split proposal. The board will consider a subdivision of face value of equity shares of the company from rupees 10 to lower denominations. The next is on Hinduja Global Solutions. The Hinduja Global Group Business Process Management has approved the buyback of 6 million shares worth rupees 1,020 crores in the board meeting, which was held on Monday. Next is on Vedanta Group. The Hindustan Zinc, which is the world largest largest manufacturer of the metal, is planning to invest over $1 billion, which is around 8,270 crores, to convert the diesel-fired mining vehicles into the battery-operated ones, and also to fully turn a green energy user over the next 5 years.
Lastly, this logistic firm delivery said on Tuesday it has acquired algorithm tech, which provides a solution chain solutions systems, and that is for rupees 14.9 crores.